दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल एक्सपर्ट में आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 30 क्वेश्चंस एंड आंसर्स मल्टीपल चॉइस पार्ट 1। अगर आप मैकेनिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं देन इस वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आगे नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इन मोशन इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका आंसर है डायनेमिक फ्रिक्शन। Next question, two balls of equal mass and of perfectly elastic material are lying on the floor. One of the ball velocity v is made to struck the second ball. Both the balls after impact will move with a velocity. Answer option v, second option v by 2, third option v by 4, fourth option v by 8। इसका आंसर है v by 2। v by 2 दोस्तों कैसे आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मोमेंटम बिफोर कॉलिशन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन। सो मोमेंटम बिफोर कॉलिशन m इंटू वी प्लस जीरो इक्वल टू m इंटू वी न्यू प्लस m इंटू वी न्यू। सो एम वी इक्वल टू 2 इंटू m इंटू वी न्यू। सो वी न्यू इक्वल टू v by 2। Next question is, the term force may be defined as an agent which produces or tends to produce, destroy or tend to destroy motion। ऑप्शन एग्री और डिसएग्री। इसका आंसर है एग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वेलोसिटी रेशियो इन केस ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन inclined at an angle theta to the horizontal and weight being pulled off the inclined plane by vertical effort is ऑप्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा। इसका आंसर होगा साइन थीटा। अब हम लोग देखेंगे साइन थीटा कैसे आ रहा है। सो वी नो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू हाइट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। सो इक्वल टू h by I। you see this is the triangle, so h by I, so equal to sin theta। I think you are understand। Next question, the range of projectile on a downward inclined plane is dash the range on upward inclined plane for the same velocity of projection and angle of projection। option less than, more than, equal to। इसका आंसर होगा more than। Next question is, if the resultant of two equal forces has the same magnitude as either of the forces then the angle between the two forces is 30 degree, 60 degree, 90 degree, 120 degree। ऑब्वियसली आंसर होगा 120 डिग्री। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लेमिज थ्योरम साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा इक्वल टू साइन गामा। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 360 डिग्री। सो 360 बाई 3 इक्वल टू 120 डिग्री। आप इसको रिजल्टेंट का फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए व्हीकल व्हेन मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ डैश अपॉन इट्स मास। ऑप्शन डिपेंड्स और डजंट डिपेंड। इसका आंसर होगा डज नॉट डिपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉडी ऑफ वेट W is required to move off on a rough inclined plane whose angle of inclination with the horizontal is alpha। The effort applied parallel to the plane is given by where mu equal to tan phi equal to coefficient of friction between the plane and the body। so इसका आंसर होगा 3 नंबर P equal to W sin alpha plus mu cos alpha। Next question, a smooth cylinder lying on its convex surface remains in dash equilibrium। ऑप्शन स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। इसका आंसर होगा अनस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। येस और नो? इसका आंसर है येस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 liter of water occupies a volume of 100 centimeter cube, 250 centimeter cube, 500 centimeter cube
एंड 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वन डायमेंशनल फ्लो द फ्लो ऑप्शन इज स्टडी एंड यूनिफॉर्म, takes place in a straight line, takes place in curve, takes place in one direction। इसका आंसर होगा takes place in straight line। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ ए फ्लूइड इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रोड्स नंबर, माच नंबर, यूलर्स नंबर। इसका आंसर होगा माच नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the kinematic viscosity is the ratio of absolute viscosity to the density of the liquid. Second number, ratio of density of the liquid to the absolute viscosity, product of absolute viscosity and density of the liquid, and product of absolute viscosity and mass of the liquid। इसका आंसर होगा फर्स्ट नंबर, ratio of absolute viscosity to the density of the liquid। Next question is in a depressed nap the pressure below the nap is atmospheric, second the pressure below the nap is negative, the pressure above the nap is atmospheric, the pressure above the nap is negative। इसका आंसर होगा सेकेंड नंबर, द प्रेशर बिलो द नैप इज नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द नोजल D for maximum transmission of power is given by where D capital D diameter of pipe, F equal to Darcy's coefficient of friction for pipe and I equal to length of the pipe। So इसका आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, इसका आंसर होगा 3 नंबर, स्मॉल d इक्वल टू कैपिटल D to the power 5 by 8 Fi to the power 1 by 4। Next question is the discharge over a right angled notch is where h equal to height of liquid above the apex of notch। ये फॉर्मूला का आपको याद रखना पड़ेगा, इसका आंसर होगा 4 नंबर 8 by 15 CD root over of 2g into h to the power 5 by 2। Next question is wire is said to be broad crested where if the width of the crest of the wire is dash half the height of water above the wire crest equal to less than more than। इसका आंसर होगा 3 नंबर मोर देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, an error of 1% in measuring head over the apex of the notch which is denoted by h will produce an error of dash in discharge over a triangular notch। इसका कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा। इसका आंसर होगा 4 नंबर 2.5%। दोस्तों देखिए सॉल्यूशन देखिए, ये बहुत शॉर्टकट किया हुआ है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए जस्ट डिफरेंशिएट क्यू इक्वल टू के एच टू दी पावर 5 by 2, उसका बाद इसका इक्वेशन नंबर 1 आया। उसके बाद एज्यूम कांस्टेंट के इक्वल टू 1 फ्रॉम गिवन डाटा डी एच इक्वल टू 1%, पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो thus डी क्यू इक्वल टू 5 by 2 इक्वल टू 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, a vertical wall is subjected to a pressure due to one kind of liquid on one of its sides। The total pressure on the wall per unit length is where W equal to specific weight of liquid and H equal to height of liquid। So कौन सा इक्वेशन सही है? WH और 2 नंबर WH by 2, WH square by 2, WH square by 3। इसका आंसर होगा 3 नंबर WH square by 2। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फॉर फाइंडिंग प्रेशर पर यूनिट ऑफ लेंथ P इक्वल टू W इंटू H वेयर वी आर फाइंडिंग प्रेशर इफेक्ट ऑन यूनिट लेंथ, सो H इक्वल टू इंटीग्रल H इंटू DH। सो H इक्वल टू H स्क्वायर 2 by 2, सो P इक्वल टू W इंटू H, सो P इक्वल टू WH स्क्वायर by 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ यूनिलैटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस द टॉलरेंस इज अलाउड ऑन one side of the actual size, one side of the nominal size, both sides of the actual size, both sides of the nominal size। इसका आंसर होगा सेकेंड नंबर वन साइड ऑफ द नॉमिनल साइज।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग अ कप ऑफ डायमीटर 25 मिलीमीटर एंड हाइट 15 mm बाय ड्राइंग द साइज ऑफ द राउंड ब्लैंक शुड बी अप्रोक्सीमेटली। इसका आंसर निकालना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। इसका आंसर होगा 3 नंबर 46 mm। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए, वी नो द फॉर्मूला, ब्लैंक डाय का फॉर्मूला जो होता है वो दिया है d इक्वल टू पाई इंटू डी स्क्वायर 2 प्लस 4dh। उसके बाद में ब्लैंक डाया निकालने का है। इधर काप डाया डी स्मॉल डी इक्वल टू 25 mm दिया हुआ है, हाइट h इक्वल टू 15 mm दिया है। सो डी इक्वल टू फॉर्मूला बैठा दिया, उसके बाद कैलकुलेट करके डी इक्वल टू 46 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बुराइजिंग फ्लेम इज यूज टू वेल्ड steel, cast iron, copper, aluminum, etc., brass and bronze, hard surfacing materials such as stellite। फोर्थ नंबर ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा 3 नंबर हार्ड सरफेसिंग मटेरियल्स सच एज स्टेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टू हाई रोलिंग मिल कंसिस्ट ऑफ टू रोल्स which rotate at the same speed and in the same direction। second option, at the same speed but in opposite direction। third option, at different speeds and in the same direction। fourth number, at different speeds and in the opposite direction। इसका आंसर होगा सेकेंड नंबर, एट द सेम स्पीड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोड टिप डायमीटर स्मॉल d इन स्पॉट वेल्डिंग शुड बी इक्वल टू where t equal to thickness of plate to be welded। सो इलेक्ट्रोड टिप डायमीटर स्पॉट वेल्डिंग के लिए होता है √t। इसका आंसर होगा √t, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस प्लेट इज यूज टू चेक द ट्रूनेस ऑफ फ्लैट सरफेसेस। ट्रू और फॉल्स? इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर्स, कैलिपर्स, डायल इंडिकेटर्स कैन बी चेक्ड बाय ए फीलर गेज, स्लिप गेज, रिंग गेज, प्लग गेज। इसका एक्यूरेसी मेजर किया जाता है स्लिप गेज से। सो आंसर होगा सेकेंड नंबर। Next question, a taper provided on the pattern for its easy and clean withdrawal from the mold is known as machining allowance, draft allowance, shrinkage allowance, distortion allowance। इसका आंसर होगा draft allowance। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ फाइल यूज्ड फॉर वुड वर्क इज। वुड वर्क के लिए कौन सा फाइल यूज होता है? सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल, एनी वन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है 3 नंबर रास्प कट फाइल। लास्ट क्वेश्चन है, अ जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग, एनोडाइजिंग, पार्कराइजिंग, सेराडाइजिंग। तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर गैल्वेनाइजिंग। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सीरियल वाइज ऑल मैकेनिकल सब्जेक्ट का वीडियो लेके आने वाला हूँ इस चैनल पे। आज के लिए बाय, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।